Hello, viewer and learners. Welcome you all to this session. In this sessions, we are going to introduce one of our very popular program, that is MA in Entrepreneurship program. सभी दर्शकों को और सभी हमारे विद्यार्थी जो कि आज सेशन में जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग एक प्रोग्राम जो कि व्यावसायिक शिक्षा विद्यापीठ के द्वारा ऑफ़र किया जा रहा है, MA एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के परिचर्चा में हमारे साथ हमारी कुलीग मिसेस आशा यादव भी हैं, आपका भी स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी आपसे बताएंगे, चर्चा करेंगे, ताकि जो भी विद्यार्थी या जो भी इच्छुक विद्यार्थी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाह रहे हैं वो इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। चूँकि आपको ज्ञात होगा कि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जुलाई सेशन का एडमिशन्स अभी चल रहे हैं, तो इस प्रोग्राम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यदि आप इच्छुक हैं तो ऑनलाइन इग्नू एडमिशन समर्थ पोर्टल पे आप जाके इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो चर्चा शुरुआत में हम ये आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा ऑफ़र किया जा रहा है। बेसिकली दिस प्रोग्राम हैज़ बीन डिज़ाइन एंड डेवलप्ड इन 1921 and this is the third year in the series. It's being offered and it is running very successfully. Many of the learners who have joined this programs, they are completing their studies. First batch जो कि 21 में जुड़े हुए थे वो इस बार फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात वी वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल आवर व्यूअर्स, सभी दर्शकों के साथ हम लोग बताना चाहें कि हमारे ही विद्यार्थी, इस प्रोग्राम से जुड़े विद्यार्थी, एक जिसको गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं स्टार्टअप स्कीम्स के तहत उसने फर्स्ट प्राइज़ विन किया। और अभी वो विद्यार्थी ने अपने ही किए गए कार्य पे उसने पेटेंट का भी काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग विस्तृत जब बताएंगे। इसमें आप क्यों इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे, why any learners or viewers those are watching today's sessions, why they are going to join this program. So what are the reasons behind it? So because we're keeping those things in mind, keeping what are the needs of our learning community as well as the government policy, this program has been designed accordingly. So in 1921 we have organize some need assessment survey sort of things as a part of policy of university. We have conducted this research, and on the basis of findings we have seeing the very positive encouraging results, we have thought of why not to have a program on entrepreneurship, because in the present scenario, whether it is a world of work, we keep on talking about instead of job या सर्विस के बजाय हम लोग क्यों नहीं अपना रोज़गार शुरुआत करें। विद्यार्थियों को यदि बिगिनिंग से ही इस तरह के माहौल में बताया जाए कि वन कैन डू देयर ओन बिजनेस, वन कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, और दोज हु आर ऑलरेडी इन दिस बिजनेस एंटिटी और सर्विस सेक्टर्स में, how they can improve their business further. So keeping these things in mind, we have organized an expert committee meetings where the experts from the different walk of life, whether you can say academia, whether you can say industries, those all people were involved in the design and development of this program. And this program has been designed very beautifully, keeping in mind the broader objectives of this program is to help our learning community to become an entrepreneur, or those who are already in the practice, how can then sharpen their skills, how can then improve their competency and skills too, so that they can make more profits, more reach to the whatever the purpose they have designed their objectives of this program. So broader objectives of to impart knowledge and skill and competencies to the starts one own business. To achieve the aim, program will focus on various aspects of a startup,
innovations and soft skills which are essential for any successful entrepreneur. Broader objectives of program is to develop competency among graduates in initiating business enterprise, facilitate successful and profitable operations of the enterprise, enable managerial skills for setting up of a new enterprise, and develop interpersonal skills and adopt good leadership behavior for empowerment of self and others. So these are the broader objectives while when we were designing this program. So we have kept these things in mind so that these objectives are transformed in the form of in the content, in the learning objectives as NEP are talking about in these terms. So we have tried our best to keep these objectives in mind while designing our program, course content, syllabi and delivery mechanism. So this program is of, as you know, is a master's levels. It's a 2 years durations program, and the nomenclature is the MA in Entrepreneurship, and the code is MAER, and it comprises of basically 17 courses. In 17 courses, we have 15 courses which are in theory in natures, and we have very purposely, we have kept 2 projects. In the first year, there is one project, and in the last, in the end, there is also another project. So that the students can practice their whatever the learning is happening over there, so that they can in the real terms they can execute it and see how whatever the learnings, whatever the knowledge is being shared over there, so whether they are able to execute it, whether they are able to practice it. मतलब जो भी हम अपनी विधा या नॉलेज को हम लोग शेयर कर रहे हैं विद्यार्थियों के साथ, तो उसको हमने कोशिश किया है इस प्रोजेक्ट्स में इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज़. पहले प्रोजेक्ट्स का हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो विद्यार्थी इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं तो एक अपना कंसेप्ट लेके अपना उस पर करें काम और उस प्रोजेक्ट्स को हमें सबमिट करें, दिखाएं. और सेकंड प्रोजेक्ट का जहाँ तक उद्देश्य है कि उस पर रियल टर्म्स में बाय doing this course, by doing this studies, maybe some idea if we have, as in the beginning we have shared with you that one of our learners in the first batch itself, he is from basically from Jammu and Kashmir, and that student has thought of how to use and also recycle the waste materials in the forms of which we see as a weeds in the ponds, which is no use of it. उसके दिमाग में ख्यालात आया कि हम इस वीड को, खरपतवार जो जिसका कोई यूज़ नहीं होता था, उसको इसने लैब में टेस्ट किया और उसको एक कैटल फूड के रूप में बनाया और उस पर पेटेंट भी करा रहा है, काफ़ी उसको सपोर्ट भी मिल रहा है गवर्नमेंट एजेंसी से. एंड सो लाइक दैट एनी आइडियाज इट्स कमिंग, इफ इट्स कमिंग टू यू, यू कैन थिंक ऑफ, यू कैन मेक ए प्रोटोटाइप ऑफ एनी प्रोडक्ट्स ऑल्सो, and you can bring to our as a part of the projects also. So like that, in brief, it is about the projects. Basically, in the beginning, this program we have launched it in the English medium, but anyway, learners for the teaching learning purpose, English is there. But at the time of exams, any person if want to write or give answer in Hindi or other regional mediums, they are free, they can write their answer into the Hindi. Even assignments maybe, which is a part of our teaching learning process, they can write their assignments into Hindi also. So in beginning, this primarily it is in the offer in English medium, and since it is a MA level program, so the duration of this program is of 2 years, minimum is 2 years. However, since this program being offered as a part of our ODL systems, so open and distance learning systems, so in the open and distance learning we give maximum flexibility to our learner community or those who are working peoples, professionals. कोई businessman है जो कि इस किसी एंटरप्राइज से या किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है और वो सोचता है कि मैं अपने हुनर को कैसे थोड़ा और इनरिच कर सकें, तो वो भी इस प्रोग्राम से जुड़ के अपना काम करते हुए, अपनी व्यवसाय को जारी रखते हुए, अपने साथ में जुड़े हुए जो भी आपके एम्प्लॉइज़ हैं
उनको भी साथ में लेके इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, और ये प्रोग्राम उनके अपने चल रहे बिजनेस को और भी बेहतरी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है. So minimum duration is of 2 years and maximum of 4 years. Also as a part of NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम इस प्रोग्राम में एग्जिट ऑप्शंस का भी प्रोविजंस किए हैं, ताकि विद्यार्थी चाहे लर्नर्स जो कि इस प्रोग्राम से जुड़े हैं एक सर्टेन टाइम पे नॉलेज या प्रैक्टिस अर्न करके वन कैन गो इनटू द फील्ड्स, one can go and practice it and again join back this program after, so that for the final outcome or for final completion of the program. So we have a provisions for exit option after completion of 1 year with a degree that we called it as a postgraduate diploma in entrepreneurships. तो यदि आपने 2 साल का कंप्लीट कोर्स कर लिया तो आपको मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप का डिग्री मिलेगा, अन्यथा आप 1 साल के बाद एग्जिट होना चाह रहे हैं तो PGDER की उपाधि से आप सम्मानित किए जाएंगे. और प्रोग्राम फीस इसका अभी 7,500 है, बट as per policy it's revised from time to time as per the university's policies. Program study centers are across the country for the support for your teaching learning process. So कोई भी विद्यार्थी अपने रीजनल सेंटर्स के माध्यम से ऑप्ट कर सकता है इस प्रोग्राम्स को while registering the programs because in the system they ask for the RCs and study centers. So these are the basic informations about this program, and as this program is of 2 years and divided into 4 semesters. So each semester comprises generally 4 courses. So in first semesters we have a course on business environment, fundamentals of entrepreneurship, business ideations and opportunity identification, business development, and entrepreneurial competencies. So these all are of 4 credits and all are theory in nature. So basically all are the theoretical in nature. So likewise in second semester we have courses like IPR and technology commercialization, management of new and small enterprises. Then we have a course on government initiatives and MSME development. Then we have a course on finance and accounting. And the end of the first years, we have a project that is with the code of MERP-01, as we have just now discussed about these projects. In the third semesters, we have a courses related with the marketing, organizational management and labor relations. Then we have a course on startup, incubation and business ethics. Then also we have a course on business research methods and application. And in the last semesters, in the fourth semesters, that is fourth semester, we have a courses on IT and entrepreneurship, innovations and strategic management. Then we have a course on social entrepreneurship, and at the end there is a project, that is a project 2 with the project MERP-002. Now moving ahead to detail about how is the our courses, what is dealt for it, and also we will discuss more about what we are you are supposed to do while doing the course completions, what are the different aspects of this program, different procedures for completing the courses, because in the distance learning many learners, many students who are joining will be thinking for joining the ODL system. It's a slightly different than the conventional system, but it is very more and less it's a similar to the conventional system. The content, the knowledge, the quality aspects, it's in all aspects we maintain those things into mind while designing development and also while delivery the programs, similarly while assessment and evaluation. So in all aspects it's no way it is less than the conventional system. And so let us begin with the course 1. Asha, just to give focus on the what is the course 1 in the semester first. Okay, fine.
Actually, the course one of this program, MA Entrepreneurship, MAER, is business environment. And under this course, we have 4 blocks, and that are socio-political environment, legal environment, and financial markets and their regulations, and economic environment. And under these 4 blocks, we have total 17 units. And what we have discussed in this unit, actually बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट एक्चुअली. जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हमारी हम जिन 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 चीज़ों से सराउंडेड हैं वो सारा हमारा एनवायरनमेंट है. चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो ये मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हों, फिज़िकल थिंग्स हों, या एटमॉस्फेयर हो, हवाएं हों, गैसेस हों, ऑक्सीजन हो, ये सारी चीज़ें जो हमको घेरे हुए हैं, हम सराउंडेड हैं, वो सारे इन्वायरमेंट होते हैं. इसी तरह बिज़नेस का भी इन्वायरमेंट होता है कि बिज़नेस जो है वो किन किन चीज़ों से सराउंडेड है. अगर उस इन्वायरमेंट को आप समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अडेप्ट नहीं करेंगे, तो आपका बिज़नेस वहाँ ग्रो नहीं कर पाएगा. तो फॉर द एडेप्टेशन ऑफ बिज़नेस इन्वायरमेंट आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बिज़नेस किन किन चीज़ों से सराउंडेड है. तो आप देखते हैं, आप सोसाइटी में बिज़नेस करते हैं, लोग हैं, सोसाइटी है, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनके ड्रेसिंग सेंसेस अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनके जो बिलीव्स हैं वो अलग हैं. तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस डालेंगी आपके बिज़नेस पे. तो आप जहाँ भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट से आपको एकदम रूबरू होना चाहिए. और हमें लगता है उसके कहीं पे भी जिस कम्युनिटी के लिए या जहाँ पे आप बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, वेदर इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, तो उस इन्वायरमेंट का आप स्कैनिंग कर रहे हैं, आप समझिए. और हम लोग आगे इस पे चर्चा से पहले क्यों नहीं हम अपने विद्यार्थियों को, लर्नर्स को बताएं ये ब्लॉक क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है. क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं या जो व्यूअर्स हैं, मेनी ऑफ दे आर नॉट फैमिलियर विद दिस टर्म्स. सो ब्लॉक, यूनिट एंड कोर्स ऑलरेडी जस्ट नाउ वी आर डिस्कसिंग. तो बेसिकली कोर्स के अंदर जैसे हमारे यहाँ ओडीएल सिस्टम्स में वी हैव ए टू मेक यूनिफॉर्मिटी एंड सिमिलर चैप्टर्स इनटू द वन ब्लॉक. मीन्स हम एक तरह के जो नॉलेज है उसको हम एक जगह एकत्रित करके एक हम ब्लॉक करते हैं, उसका एक टाइटल देते हैं. तो ब्लॉक उससे बोलते हैं. ब्लॉक के अंदर में यूनिट्स होते हैं जिसको जनरली हम लोग अपने यहाँ जो कन्वेंशनल सिस्टम्स में पढ़ाई करते हैं जिसको हम लोग चैप्टर बोलते थे, तो यहाँ पे एक यूनिट के नाम से जाना जाता है. तो उससे आप हमारे विद्यार्थी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जैसा आपने बताया था कि हमारे इस कोर्स में 4 ब्लॉक्स हैं. एक कोर्स में औसतन यदि 4 क्रेडिट का कोर्स है तो उसके अंतर्गत एक के 4 ब्लॉक्स होंगे. 1 ब्लॉक 1 क्रेडिट के इक्विवेलेंट होता है. अब बात आ रही है क्रेडिट, व्हाट डज इट मीन बाय क्रेडिट? सो 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 आवर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इन द ओडीएल सिस्टम लर्नर्स को आपको खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए. आपके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, कमिटेड हो, हमें इस प्रोग्राम को जोड़ना है, नॉट फॉर द जस्ट डूइंग इट जस्ट टू एक्वायरिंग द एक डिग्रीज, बट सर्टन थिंग्स यू हैव टू एक्वायर, सर्टन कॉम्पिटेंसी, सर्टन नॉलेज. सो उसके लिए ज़रूरत है कि आप मोटिवेटेड रहें, आप इसको पढ़ना है सेल्फ में. तो 30 आवर्स की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, likewise as today we are taking a session, similarly आपके रीजनल सेंटर्स पे, आपके स्टडी सेंटर्स पे इस तरह के काउंसलिंग हुआ करेंगे आपके सपोर्ट के लिए. बट इट वोंट हैपन लाइक एज वी ऑर्गेनाइज इट इन द कन्वेंशनल सिस्टम्स में, जहाँ की चैप्टर वाइज पूरे कोर्स समाप्त किए जाते हैं. यहाँ पे लिमिटेड काउंसलिंग्स होता है, सेलेक्टिवली कोर्सेज, सेलेक्टिव टाइटल्स, ब्लॉक वाइज, या तो कोर्स में हम 4 कर लेते हैं या 5 कर लेते हैं. और पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है काउंसलिंग सेशंस का कि हम एक्सपेक्ट करते हैं लर्नर्स या विद्यार्थी जो इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं वो कुछ पढ़ के आए हैं, उसके बारे में अध्ययन करके आए, ताकि उसमें हम लोग डिस्कशंस कर सकें, आपको प्रश्न पूछें और उसका हम लोग उसका एक्चुअली काउंसलिंग में हम लोग मोस्टली जो करते क्या हैं
इसमें ODL सिस्टम में हम डाउट्स को क्लियर करते हैं। आप पढ़ के आते हैं, फिर आपको पढ़ने के बाद जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो आप उनको लिख लें, और फिर आप उन काउंसलिंग सेंटर्स पे जाएं, स्टडी सेंटर्स पे, और वहाँ आपके काउंसलर्स होते हैं, वो आपकी काउंसिल कर देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये चीज़ें जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, वो सब वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। तो काउंसलिंग के साथ साथ वहाँ पे कभी कभी ट्यूटरिंग भी होती है, तो क्लास में क्लास भी ले लेते हैं, जैसे फेस टू फेस की तरह है। लेकिन मेनली जो इसका एम है वो है आपके डाउट्स को क्लियर करना। तो इस तरह से क्रेडिट्स ब्लॉक्स के बारे में हमने आपको बताया। इस पे आप जब आपको प्रिंट मटेरियल, इसका स्टडी मटेरियल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो आप उसको देखेंगे तो आपको सुविधा होगी। इसके साथ साथ हम लोग विद्यार्थियों को प्रोग्राम गाइड भी उपलब्ध कराते हैं, जिसमें जो हम लोग आज बता रहे हैं आपके डिस्कशंस में, दिस एवरीथिंग इज रिटन ओवर देयर वेरी क्लियरली, हाउ टू गो थ्रू योर कंटेंट, हाउ टू गो थ्रू योर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, हाउ टू राइट द असाइनमेंट्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ असाइनमेंट्स, so everything is written over there. So important is that very important aspects of ODL learners is to be a very disciplined learners. You have to keep yourselves very focused to the studies, because there is no any fixed timeline that there is a school, you have to go to school or colleges at the fixed times. Anytime, anywhere, whether it is a workplace, whether it is a class, wherever you are, you can study as mentioned 30 hours. Nobody is going to check it, but you have to study on your own. Then only you can participate in the counseling sessions. You can write your queries, questions very in a scientific way. You can answer the questions. You can score good marks. So these are the things, basics, parameters. These are the things while as ODL learners you have to keep these things in mind. So while continuing our discussions about the first course, that's the business environment, के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पहला हमने बात किया कि उस जो भी इस व्यवसाय से जुड़ना चाह रहा है, तो उसकी सराउंडिंग्स का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उन्हीं सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को आपके बिजनेस को अडेप्ट करना पड़ता है। तो ये सराउंडिंग्स में भी सोशल्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों से, लीगल, इन सारी चीज़ों से, गवर्नमेंट क्या है, वो गवर्नमेंट उस बिज़नेस को कितना बढ़ावा दे रही है, कितनी पॉलिसीज़ बना रही है, क्या क्या स्कीम्स ला रही है। तो ये सारी चीज़ें जब दे विल गेट एक्वेंटेड विद दीज ऑल द थिंग्स, देन डेफिनेटली दे विल अडेप्ट द environment of that particular business, and they can grow their business and gain the profit also. Very good. So these things, while setting any business enterprise or these things, so one should understand this environment is very not only as a part of policy, how the policies are friendly, how the laws are there, so that before starting you should be aware about those things, because making any mistakes or these things. So if you are aware about these things, what are the legal aspects are there, and more importantly कि हमारा रॉ मटेरियल्स कहाँ है, आपका सप्लाई प्रोडक्शंस कहाँ है, किसके लिए आप एम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो आई थिंक सो मार्केट, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, एक्चुअली होता क्या है, कुछ जब आप इन्वायरमेंट लेते हैं तो कंपनी के या आपका बिजनेस के अंदर का एक इन्वायरमेंट है, जिसमें आपकी ये मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं, वो कितने स्किल्ड हैं, कितने उनमें मतलब इथिक्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मिशंस क्या हैं, गोल्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, और इसी के क्योंकि ये आगे चल के आपकी कंपनी को इन्फ्लुएंस करेंगी या इफ़ेक्ट डालेंगी, और आपका बिजनेस जो है उस पर वो प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं, और वो नीचे आपका रिस्क फैक्टर भी उसमें आ सकता है। इसी तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है कंपनी का, जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट पे तो कंपनी का जो कंट्रोल होता है, लेकिन एक्सटर्नल पे कंट्रोल नहीं होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फर्दर डिवाइडेड करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट एंड माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो सप्लायर्स आपसे जुड़े हुए हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, बीच वाले लोग हैं, जो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक लेके जाते हैं, पब्लिक है, कस्टमर है, वर्कर्स हैं, ये सारे जो हैं माइक्रो
लेवल पे काम करते हैं। और मैक्रो लेवल पे जो आपका इन्वायरमेंट बनता है वो आपका है सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसा अभी आप कह रहे थे कि आप कहाँ से रॉ मटेरियल लाएंगे। जैसे आपने अगर आप चाहते हैं कि हम शुगर मिल खोलना चाहते हैं तो शुगर मिल आप उस जगह को चूज़ करिए जहाँ गन्ने की खेती होती हो और जो क्लाइमेट उसके लिए अच्छा हो, जो सॉइल फेवरेबल हो, तभी वहाँ से आप रॉ मटेरियल लेंगे और वहाँ पे आप चीनी मिल या जो भी आपका उससे रिलेटेड बिजनेस है आप वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कहीं और करते हैं, तो नेचुरली ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है और आप कंपटीशन में दूसरी कंपनीज, सिमिलर कंपनीज के साथ नहीं आ पाते हैं। तो आपको हर तरह का एनवायरनमेंट जानना बहुत ज़रूरी होता है, वो माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे या इंटरनल एनवायरनमेंट। और जब आप सारे तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं तभी इन दोज कंडीशन यू कैन ग्रो योर बिजनेस एंड गेन प्रॉफिट। बिल्कुल आपने ब्रीफ में काफ़ी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आपने बताया कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हाउ दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू एनी businessman who want to start their any these things, one should study very minutely before setting any enterprise over there, so that in future or she should not face any problems. What about, can you tell us also something about the course 2? Yes, the course 2 of this program is fundamental of entrepreneurship. Actually entrepreneurship होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक फ्रेंच वर्ड से आया है। वो फ्रेंच वर्ड है इंटरप्रेंडर, मतलब उसका मतलब होता है टू डू समथिंग और टू अंडरटेक समथिंग और टू इनिशिएट समथिंग, कुछ आप करिए। तो वहाँ से इस वर्ड को ओरिजिनेट हुआ, वहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया। और फिर अगर हम इन जनरल आप एंटरप्रेन्योरशिप को आप एक वर्ड है, इसको आप दो पार्ट्स में अगर बाइफरकेट करें, डिवाइड करें, तो एंटर प्लस प्रेन्योरशिप आता है। मतलब प्रेन्योरशिप मीन्स एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, आप कुछ बिजनेस का काम करिए। तो एंटर टू स्टार्ट द न्यू बिजनेस, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप इन जनरल। और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करिए, कंपनी सेटअप करिए, इंटरप्राइज सेटअप करिए टू गेन द प्रॉफिट। तो ये द होल प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग द बिजनेस and from gaining the profit is entire process is known as entrepreneurship. अब इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है इस प्रोसेस में, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर होता है। पर्सन, हाँ, पर्सन, एंटरप्रेन्योर, कि वो जो बंदा है, वो जो बिज़नेस करना चाहता है, वो जो प्रोडक्ट्स दे रहा है, जो या सर्विसेज दे रहा है कम्युनिटी को, सोसाइटी को, उसका कोई वैल्यू हो उसके लिए, नीड, वो कस्टमर की नीड्स को, प्रेफरेंसेस को, टेस्ट को सेटिस्फाइड करे, तभी उसको जो है वो मनी गेन करेगा वो, और जब या फिर उससे प्रॉफिट गेन करेगा। तो बहुत सारे, अभी हम लोगों ने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जिनके नाम सुने हैं। जैसे गूगल कंपनी है, गूगल हम सभी जानते हैं सर्च इंजन है। तो गूगल का जो आपको ये है लेरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, ये इसके फाउंडर्स हैं। इसी तरह फेसबुक है, फेसबुक का तो बहुत ही कॉमन नाम है फाउंडर का, दैट इज़ मार्क जुकरबर्ग। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो इसमें हमारा बिल गेट्स, और वो शायद रिचेस्ट पर्सन भी है। और इसी तरह एक एप्पल कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, और उसके आपको फाउंडर्स में से एक हैं स्टीव जॉब्स। और इसी तरह आपका HP कंपनी है जिसके हमारे लैपटॉप्स होते हैं, डेस्कटॉप्स होते हैं, तो वो है बिल हैवलेट्स। तो ये सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब ये एंटरप्रेन्योर्स इतने सक्सेसफुल, इसी तरह से हमारे यहाँ अपने इंडिया में भी सर्विस सेक्टर्स में, चाहे IT सेक्टर्स में विप्रो है, TCS है, टाटा, सो ये भी काफ़ी सक्सेसफुली अपना सेटअप करते हैं और वेरी सफल एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो आज के डिस्कशंस में हमने जनरल आपको एक बताया है, बाकी हर कोर्स वाइज हमारे यहाँ काउंसलिंग्स होगा, एज वी वर जस्ट नाउ वी आर टेलिंग यू। सो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हों जो आज के इधर सेशंस में अटेंड किए हों, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं
तो गूगल इग्नू वेबसाइट पे आप जाके इसमें दाखिला ले सकते हैं, और बाकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे स्कूल्स को भी आप लिख सकते हैं, चाहे maer@ignou.ac पे भी आप लिखें, विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। Thank you. Indira Gandhi National Open University, accredited with A++ grade by NAC, provides you a quality education in open and distance learning. School of Performing and Visual Art is offering a wide range of programs in performing and visual art. Certificate program in painting, certificate program in applied art, certificate program in Bharatanatyam dance, certificate program in Hindustani music, Carnatic music and theatre arts. बहुत यत्न करने के बाद भी नहीं पा सका। संजोग से मैं इस बार लेके आया हूँ। All the certificate programs are of 6 months duration with 16 credits. We offer 1-year diploma in theatre arts with 10+2 eligibility criteria of 32 credits. The learners are exposed to various aspects of elements of drama, theatre games, acting techniques, scene work procedures, and they will also have the opportunity to take part in a classroom play production. We also offer bachelor's degree in Hindustani music. This program is duration of 3 years, and learners are having the flexibility to complete this program over a period of 6 years. Apart from bachelor's, we also offer masters in drawing and painting with a duration of 2 years. Apart from certificate programs, degree, masters, we also offer PhD programs in performing and visual art with a specialization of visual arts, music, dance and theatre. Art is the perfect manifestation of every human being. So what you are waiting for? For online admissions, please visit our website www.ignou.ac.in. For more details, you can also contact Director, School of Performing and Visual Art, Block number 15G, IGNOU, Maidan Gadi, New Delhi. You can also reach us at sopva@ignou.ac.in. Happy learning! आश्रम के चूहे पकड़े। तुम तो सचमुच राजा लगने लगे। पता नहीं ये राजयोग कब तक रहेगा। तो हमारी माया के लिए सुरक्षित है। Hello viewers, we are going to discuss India-US relations in the context of recent visit of Indian Prime Minister Narendra Modi to Washington and many more places in United States of America. You know, today India-US relation is more relevant. It is the relations for global partnership, strategic partnership since 2005. India is the largest democracy. Whatever the Americans claim, it is the oldest democracy. So it is the bond between the largest and oldest democracy
in the new world order in the 21st century. There's a lot of point of convergence and divergence between India and the US relations. So I focused on why this relation is indispensable. India and US is the natural partner in the era of globalizations, in the era of multilateralisms. So that's why this relations is important today. If you look at the newspapers recently, Indian Prime Minister Modi visited in June, the last month. He also addressed Indian diaspora. So, whatever the warm welcome by the President of United States and other dignitaries, it's matter for the degree of cooperation, degree of relations between the two democracy in 21st century. If you look at why and when the importance of these relations, especially the post 1991, because before 1991 it was the era of Cold War, where the two superpowers, one side the United States of America, second side the Soviet Unions, they confronted each other on the basis of democracy, on the basis of their ideology, military strength, economic